Hello, welcome to Arbind Singh Academy. This is another session on basic concept of chemistry. Today we are going to discuss about the characteristics of matter and their measurements. So, every substance is unique and they have a special characteristics. Their properties can be divided into two major segments. One is called physical property, another is called chemical property. So let us discuss today about these characteristics. What are the physical, what are the chemical properties, and how we can distinguish them, and what are those and how they can give the special characteristics and feature of every substance. So let us discuss this. We are going to discuss today about the characteristics of different substance. So we are going to discuss today about the properties of matter and their measurement right. So this is the topic which I am going to discuss today. Every substance is unique. Every substance is unique and having characteristics properties. Right? Characteristics property. What is meaning of this? Characteristics means which will define the character. Of substance. Character of substance. What type of substance is, what type of people is, what type of you are. So that is define your character. Character what defined? Character defined that what you are and how you are, what type of people you are. So basically character defines something about the personality, something about the structure, something about the behavior, something about the appearance, something about mechanism and behavior with other people, like this. So similarly, substance has some characteristics, and these characteristics will define that what kind of substance is, what is the structure, what is the color, what is the sense, what it treated with the other substance, like how it react with oxygen, how it react with acids, like this. So many characters are there which will involve, and this can be defined the substance. And this is a unique for every substance, and that is why they are differentiated from one another. एक दूसरे से अलग होने का मतलब यही है कि सब्सटेंस की जो कैरेक्टर है वो एक दूसरे से अलग है, तभी वो अलग सब्सटेंस है. अगर सेम कैरेक्टर हो तो फिर अलग सब्सटेंस कैसे होगा? तो एवरी सब्सटेंस हैज यूनिकनेस इज देयर. एवरी सब्सटेंस इज यूनिक, एंड बिकॉज ऑफ यूनिकनेस it can be differentiate from other. Uniqueness which will differentiate it from other substance, right? So ये होना चाहिए, तभी ये यूनिक होता है. Properties can be different type of properties. Characteristics properties. So properties is nothing else but it can be divided into two ways, that is a physical and chemical properties. Properties is basically the appearance. It is the appearance and behavior. I can say it is the appearance as well as behavior with other substance, right? Substance. So this is a property. So every substance is unique and having characteristics, properties
what are those two type of properties which will define the different characteristics and give them unique identity that I am going to discuss. So properties of substance. Properties are two types. One is called physical property. Physical properties. Physical properties. And another is called chemical properties. Chemical properties. Right? So physical properties and chemical properties. Got it? Physical and chemical properties. These are the two different type of properties of substance. What kind of physical properties? Physical means something which is external. Something which is external, which can appear. Right now, external properties. And this external properties include the how it looks. How it looks means what type of color is color, right? What type of odor is, right? Odor, color, odor, order. Then there is a what is boiling point, what is melting point, right? Color, order, boiling point, melting point, even a structure. This is a physical appearance, how it looks. And density, what is the density? So all these are physical properties, you can say. And in physical property, these are external. You can see the color, you can see the sense the order, you can find the boiling point, you can find the melting point and density of the substance. Because why? When melting and boiling point we are going to occur, the status of substance is not going to change. In all these, status of substance not changes. Right now we are going to boil something, so before just boiling a start, the substance is not going to change, but after the boiling it may turn into vaporized. After melting it may turn from solid to liquid, but before that the status of substance is not going to change. So these are the physical property, right? Now chemical properties are those properties which can be observed when chemical change occurs. So this is an internal property, you can say. I would say this is an internal property, and this property comes into play when chemical changes occur. When chemical changes occur, then chemical property can be observed. Chemical properties of substance can be observed. Substance can be observed, right? Observed. When chemical changes occurs, then chemical properties of the substance can be observed. And this they includes acidity of substance, basicity of the substance, combustibility of the substance, right now. So this is a B, combustibility of the substance, etc. These can occur. Thereafter, how it react with other substance and make some reaction with other substance like oxygen, water, acid, oxides, etc. So these are chemical properties. Now some type of substance
reactions, different mechanical reactions we will observe and we will discuss. So here status of substance will change. In this way, status of substance will change after chemical reaction. After chemical reaction, status of substance will change. You know, the status of substance will change. Chemical reaction takes place, substance will change. For example, hydrogen and oxygen react with each other and they will form water, which is hydrogen and oxygen both are primarily in gaseous stage, but when they form water, their characteristics is different. Even the status is also changed, it is a liquid. So usually the character will change and substance, the nature and behavior will also change when chemical reaction take place. So now we want to learn about, this is the characteristics, different characteristics of different substance is not the topic of this subject today, but we will discuss it separately in the different chapters. What the unit is, this is a properties of substance and measurements. So there are infinite number of different type of substance and compounds and elements, and everyone has different properties, so that cannot be possible to discuss here in this session. So we will discuss that later on. That why I wanted to tell you what are the difference between physical and chemical properties, and that I think I have conveyed to you. तो वो हमने बता दिया आपको कि क्या क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो कि फिजिकल प्रॉपर्टी किसको मानेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज किसको मानेंगे, वो हमें लगता है कि मैंने बता दिया है। अब सब्सटेंस की इस टॉपिक के दो पार्ट थे कि एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड देयर मेजरमेंट्स। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नंबर्स में मेजर किए जाते हैं, जैसे एक डजन है केले, राइट ना, 1 डजन बनाना, यू कैन काउंट इट। 6 meter cloth, that is 6 times of length meter in which it is measured. For example, this is the 7 inch, say like this. So the span is 7 inch, it means 1 inch, 2 inch, 3 inch, 4, 5, 6, 7, like that. We can calculate inch is one of the unit in which this length is 7 times. So that is why this is called 7 inch. So length can be measured in terms of something unit, that is say inch here, right? Maybe some other length can be measured in terms of centimeter when it is very small. Some other length which is very long we can measure in terms of meter. And suppose the distance from Delhi to Mumbai we have to measure, so what we can measure is not in centimeter and meter but in kilometer. So every length, even length can be measured in different units depending upon the size and structure. Similarly here mass can be measured in pounds, mass can be measured in kilogram, mass can be measured in gram, milligram, centigram, you know, so many different units are there in which they can be measured. But primarily there is one major unit which is accepted worldwide, and other length can be measured in terms of that one only. So ये जो बेसिकली मेजरमेंट की सिस्टम थी वो दो तरह की सिस्टम थी, और नंबर्स को मेजर करने के लिए जैसे मास है, लेंथ है, एरिया है, अब इनको मेजर करने के लिए यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी। सो इसलिए अलग अलग यूनिट डेवलप किया गया, और ये 10th सेंचुरी, लेटर 10th सेंचुरी में ये सारी यूनिट्स जो हैं वो लोगों ने डेवलप किया। कौन से लोगों ने डेवलप किया? तो पहले जो है वो दो तरह की यूनिट सिस्टम मेजर डेवलप किया गया। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, देयर आर 2 units basically, and one is called English system, and another is called metric system, right? And in English system they had given the measurement of things in English system, like this is also popularly called FPS system. FPS system, that is called foot, pound and second system. Foot, pound, second system. F stands for foot, this is for foot, means length was measured.
pound, and this is second. It means what in this system is, they say the time length is measured in terms of foot, mass is measured in terms of pound, and time measured in terms of second. So this was the system that is called English system. In metric system, what they say that metric system is, this is a French system developed by French people, so this metric system is nothing else but French system. And this system, they say this is a MKS system, that is called MKS system. MKS system means what they measure? They measure the mass in terms of, this is mass, kilogram, and second system. So this is mass is for what? Mass for length, kilogram for mass, and second for time. They used to do this, right now. So that is why this is called MKS system, in which mass, length, and time can be measured with different system. The byproduct of this metric system was also one of the called CGS system, and in that system, what is that? CGS system, and that is called centimeter gram second system. That is centimeter gram, mass is observed in terms of gram, and time in terms of second. So that is another system that is called CGS system. But here this is almost similar, because apart from this length, which is meter, length is meter kilogram, sorry. Here this is for length, meter. This is for meter, and here mass is measured in terms of kilogram, meter is for length, and meter and centimeter, they are correlated. Kilogram and gram is correlated. So we can find this is byproduct of the system called CGS system. Although in physics we will use it widely, CGS system, but in chemistry this is basically two system. One is called metric system, another is called English system, and another is called metric system. So English system and metric system are two system. So इनिशियली क्या हो रहा था कि एक कंट्री में जब कुछ माप तौल के भेज के जब इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ी और लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे, बिजनेस करने लगे, तो उनको दिक्कत आने लग गई. एक कंट्री अपनी सिस्टम में मेजर करके भेजता था, दूसरी कंट्री के मेजरमेंट सिस्टम पे वो फेल्योर होते थे, दिक्कत होती थी, कॉन्ट्राडिक्शन होती थी. तो इसकी डिमांड होने लगी कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कि पूरी वर्ल्ड वाइड सब लोग जो है उसको एक्सेप्ट करें. So 1960 and onward they started for developing this idea, and thereafter in 75 the International Union of Conference of Weights and Measures, एक जो फ्रांस में होता है, उस पे इन्होंने क्या किया कि एक एक्सेप्ट किया कि हम ऐसा है कि MKS सिस्टम को ही एक सिस्टम इंटरनेशनल नाम देते हैं, इसी को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करते हैं. तो ये 1975 ये है 1875 में ये फ्रांस में इसको एक्सेप्ट किया गया. दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, राइट. तो इसमें जो है वो किसको क्या माना गया और उसके क्या क्या यूनिट को एक्सेप्ट किया गया, राइट. ये अब हम सीखते हैं कि कौन कौन से सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम और सिस्टम इंटरनेशनल दोनों ही बातें करते हैं. दैट इज SI यूनिट. क्या बाई प्रोडक्ट है? SI. दैट इज व्हाट स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल. एंड था क्या? इंटरनेशनल, राइट ना, सिस्टम इंटरनेशनल. ये जो है ये इंटरनेशनल एक ऐसा सिस्टम जिसको इंटरनेशनली लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार हुए. इस सिस्टम को सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं.
अब अगली बात जो कि इस इंटरनेशनल सिस्टम के लिए, सिस्टम इंटरनेशनल में किसको क्या माना गया? सिस्टम इंटरनेशनल में उन्होंने कहा, नेशनल में इन्होंने यानी एसआई सिस्टम में, सिस्टम इंटरनेशनल, इसमें क्या कहा गया उन्होंने कि कहा कि कुछ यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, जैसे कि लेंथ है, तो लेंथ को मेजर करने के लिए क्या होना चाहिए? मीटर होना चाहिए, इसका सिंबल एम होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से मास है, तो मास को किस में मेजर करना चाहिए? किलोग्राम में मेजर करना चाहिए, और इसका सिंबल क्या होना चाहिए? केजी होना चाहिए। तो इस तरह से टाइम को किस में मेजर करना चाहिए? तो टाइम को सेकंड में मेजर करना चाहिए, इसका सिंबल एस होना चाहिए। करंट को किस में मेजर करना चाहिए? तो करंट को एम्पियर में मेजर करना चाहिए, इसका सिंबल ए होना चाहिए। लुमिनियस इंटेंसिटी को किस में मेजर करना चाहिए? इंटेंसिटी, तो इसको कैडेला में मेजर करते हैं, CD, राइट। इस तरीके से एटॉमिक मास को किस में मेजर करना चाहिए? एटॉमिक मास को, तो एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए इन्होंने कहा कि आप मोल में मेजर करिए, राइट, MOL शॉर्ट फॉर्म होता है, राइट। तो इस तरीके से टेम्परेचर को किस में मेजर करना चाहिए? तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन, और इसके लिए सिंबल के इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें बनी, इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया कि भाई ठीक है, चलो इसको अब आज से यही इस्तेमाल करेंगे। लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, और मास को केजी में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, और करंट को एम्पियर में, लुमिनस इंटेंसिटी को कैडेला में, और एटॉमिक मास को मोल में, और टेम्परेचर को केल्विन में। तो ये जो 7 यूनिट था, ठीक है, इसको कहा गया फंडामेंटल यूनिट। ये जो 7 यूनिट थे, इसको कहा गया फंडामेंटल यूनिट, राइट। इसको 7 को फंडामेंटल यूनिट कहा गया, और बाकी दुनिया में जितनी चीज़ें बनी उनको कहा गया डेराइव्ड यूनिट। सो दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, और इसको मेजर किया गया। अब सवाल है कि कोई पूछे कि भाई कोई चीज़ है जो 7 मीटर है, इसका मतलब एक मीटर होता है जिसका ये 7 टाइम्स है, मीटर का 7 टाइम्स। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा हो कि तो मीटर होता कितना है, किसको मीटर कहेंगे, आखिर मीटर किसको कहेंगे? और सबसे पहले जो मीटर बनाई वो किस कंसेप्ट में बनाई? किलोग्राम किस कंसेप्ट में बनाई? कितनी मास को हम किलोग्राम कहें, कितनी टाइम को हम 1 सेकेंड कहें? तो इन सब की डेफिनेशंस होती है, और इन सब के डेफिनेशंस किस आधार पे बनी है, वो भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त स्टोरी है। हालांकि उन सब स्टोरी के डिटेल्स में जाने की ज़रूरत तो नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण हम बता देते हैं, एक स्मॉल डेफिनेशन बता देते हैं हर एक का, जो आप याद रखने लायक हो आपके लिए, और आप याद रख सकते हैं। वैसे ये कहीं आता नहीं है, बट फिर भी आपकी जानकारी होनी चाहिए कि इनफैक्ट ये होता क्या है, और इसको मीटर किसे कहते हैं। तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं कि मीटर क्या है। पहला चीज़ कि मीटर क्या है, मीटर किसे कहेंगे? सिंबल है M, मीटर किसे कहेंगे? सो 1 मीटर इज व्हाट? आपने सुना होगा कि 1 सेकेंड में लाइट जो है लगभग 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। सुना है ना? सुना होगा कि 1 सेकेंड में लाइट लगभग 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। और ये उल्टी बात हो गई, कि उल्टी का मतलब ये होगा कि रिवर्स बात हो गई कि लाइट 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। एग्जैक्ट डिस्टेंस बोलूँ तो 1 सेकेंड में लाइट जो है वो 3 लाख एग्जैक्ट नहीं है, ये है 29 करोड़ 97 लाख 29 करोड़ 97 लाख 92 हज़ार 458, 29 करोड़ 97 लाख 92 हज़ार 458 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो 1 सेकेंड में लाइट इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 1 सेकेंड में, राइट। डिस्टेंस इतना मीटर इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगाएगा जी? 1/29 करोड़ 97 लाख 92,458 सेकेंड, इतना लगेगा ना। इतना मीटर ट्रैवल करने में 1 सेकेंड लगता है, तो 1 मीटर ट्रैवल करने में इतना सेकेंड लगेगा, है ना।
इसका मतलब यही हुआ कि 1 मीटर का डिस्टेंस क्या हुआ, तो इतना सेकंड में लाइट जितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको 1 मीटर कहेंगे। यानी कहाँ पे, वैक्यूम में। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, ट्रेवल बाय लाइट in 1/29,97,92,458 second of a second is called 1 meter. 1 meter is called 1 meter. Let me write completely. 1 meter, right? That is denoted by 1 m. So this is what the basic definition of. You might be surprised that who will have a authority to calculate this, but this is a fact. ये होगा, इतना लाइट इतने सेकंड में जो लाइट ट्रैवल किया उसको हम कहते हैं 1 मीटर, राइट। अब उसके बाद जो है वो दूसरा क्या था हमारा यूनिट, दूसरा यूनिट था मास। तो मास के बारे में बताएं कि 1 किलोग्राम कितना होता है, व्हाट इज 1 किलोग्राम। सो किलोग्राम, next is kilogram, next point is kilogram, that is kg. What is this and how this can be defined? There is no such definition of kilogram, but एक बात है कि एक प्लैटिनम इरिडियम का बना हुआ सिलेंडर है जो 1 kg कहलाता है। ये 1 kg है। ये एक प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप, और ये प्लैटिनम इरिडियम का बना होता है। किसका बना हुआ है ये, प्लैटिनम इरिडियम का। क्यों प्लैटिनम इरिडियम में क्या खास बात है जी, इरिडियम का ये मिश्र धातु है, इट इज़ मेटलॉयड, और इसी का ये बना हुआ है। क्या है इसमें खास बात, इसमें ये बात है खास कि इसमें जो बना हुआ है इसमें, और ये एयर टाइट जार में रखा हुआ है। दिस इज केप्ट इन एयर टाइट जार, एयर टाइट जार। Why this is kept in airtight jar and what is why it is made of platinum iridium? प्लैटिनम इरिडियम में ये है कि टेम्परेचर का इस पे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। या ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ जाने से इसमें किसी तरह का एक्सटेंशन होगा और टेम्परेचर कम हो जाने से इसमें किसी तरह का कॉन्ट्रैक्शन होगा और इसके मास और डेंसिटी में कोई कमी होगी। दूसरी चीज़ कि प्लैटिनम इरिडियम एक मेटलॉयड है जिसका इरोजन नहीं होता, तो ये कई हज़ार साल तक ऐसे ही पड़ा रह सकता है, ठीक है। और इसे एयर टाइट जार में रखा हुआ है ताकि इस स्लीव में किसी तरह का मॉइस्चर और ये सब ना आए और इसको एकदम एक्यूरेट वेट में रहे। बाहर से मॉइस्चर आ जाएगा तो इसके वजन बढ़ सकते हैं, इसलिए इसको एयर टाइट जार में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, तो ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, यहाँ पे रखा हुआ है। इट इज़ केप्ट एट, यहाँ लिख देता हूँ, इट इज़ kept at in the office of international bureau of weights and measures of weights and measures मेजरमेंट, ठीक है। इसमें मेजरमेंट्स ये है फ्रांस में, तो यहाँ पे ये रखा हुआ है और इन फ्रांस उसी के ऑफिस में ये रखा हुआ है और ये बना हुआ है इस तरीके का। और इसी से जितना भी किलोग्राम आपको होता है इसी के कंपैरिजन में मेजर किया गया उतने बराबर में हम अलग अलग किलोग्राम्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोटोटाइप है और इसका कोई और इसका डेफिनेशन नहीं है, एक पहले बनाया हुआ है। और बाकी इसके कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में और बेसिस के बारे में कि किसको बनाया गया ये एक स्टोरी तो है, लेकिन इस सब्जेक्ट के बाहर की बात है, तो इसलिए उसको अब हम नहीं अभी डील कर रहे हैं। किलोग्राम के बारे में बात हो गई, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा यूनिट था हमारा वो क्या था, वो था हमारा सेकेंड, टाइम सेकेंड क्या है। तो सेकंड के बारे में समझते हैं कि सेकंड क्या है, व्हाट इज सेकंड। एक सेकंड कितने को कहेंगे, तो ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। एटॉमिक क्लॉक जो बनी थी उसके बाद जो है
और टाइम में सेकंड की कैलकुलेशन की गई, और सेकंड की कैलकुलेशन कैसे की गई? दिस इज इवेल्युएटेड एज द वाइब्रेशन ऑफ cesium atom, right? Was cesium 133 के vibration of cesium 133 is used to calculate 1 second, right? So vibration, how many vibrations is called 1 second? So that is 9 Arabs 19 lakh crores 26 lakh 31 19 Arabs 19 crore 26 lakh 31,770 vibrations of cesium 133 atom is called 1 second, right? आप इतना ही याद रखें, काफ़ी है। ये 919, that is internationally it is written in 3:3 numbers. So 9 Arabs 19 crores 26 lakhs 31,770. This is the data which you can remember, and that can be calculated as this is the vibration of cesium atom is called 1 second. So 1 second आपने सीख लिया क्या है, right? Now the thing is current 1 ampere, how much quantity is called 1 ampere. So the next thing is ampere, right? Ampere, 1 ampere is how much? Time is second. So 1 second have been calculated. Now 1 ampere is what? So ampere is defined as two parallel conductors, infinite conductors. The length of these two parallel conductors is 1 meter, right? Then because the current flowing in two different parallel straight conductor, then there is a force of attraction between them if they are current flowing through them. And this force is what? Force of attraction and repulsion depending upon whether they are in opposite direction or same direction. Current is flowing, but when the current is flowing, there is a magnetic field created, and magnetic field, due to this magnetic field there is a force in between. This force is how much, and what type of amount of current can be 1 ampere? The amount of current, right now, which produce 2 into 10 to the power, that produce the force between these two parallel conductors, 2 into 10 to the power minus Newton per meter. The force, amount of force should be 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. So when this force is produced, such amount of current is called 1 ampere. Means 1 ampere can be defined as the amount of current which is enough amount of current flowing through two, पहले ये लिख लें, amount of current flowing through two parallel straight conductor of infinite length and has negligible cross sectional area, negligible cross section area, cross section area means, what is this cross section area? ये जो एरिया होता है, ये जैसे ये पाइप है, ये मोटाई है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, है ना? तो इस तरह से नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए, which produce force, which produce
which produce force equal to 2 raised to the power 2 into 10 raised to the power say Newton per meter length. Means between when they are separated by 1 meter away from each other, separated from 1 meter away from each other, 1 meter away from each other, 1 meter away from each other, right ना, 1 meter away from each other. तो ये डेफिनेशन हुआ. क्या मतलब हुआ इस सबका, इस कहानी का? ये कहा गया कि अगर दो पैरेलल स्टेट कंडक्टर अगर एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे हों और उनके बीच में एक करंट फ्लो कर रहा है इसमें आई, इस पैरेलल में, तो ये अमाउंट ऑफ करंट इतनी होनी चाहिए कि जो इनके बीच में 1 मीटर के डिस्टेंस होने के बाद इतना फोर्स 1 मीटर लेंथ के बीच में प्रोड्यूस कर सके, तो उस अमाउंट ऑफ करंट को हम कहेंगे 1 एम्पियर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज कैंडेला, राइट. आई थिंक दिस इज ए नेक्स्ट वन इज कैंडेला. सो दिस इज ए कैंडेला. Let me correct this. This is something which is wrong. Candela. Right. So what is the CD? How to do this? Let me write this. Candela. CD. What is this? Candela is what? When a source of light emits monochromatic radiation of frequency 540 into 10 to the power 12 hertz in a direction with radiant frequency intensity, radiant intensity 1/683 watt per steradian in that direction. Then that is called candela. Right. What is the meaning of this? What is the two terms which is I think you are not able to understand. Steradian is what, and hertz is the unit of frequency. Everybody knows. Monochromatic light, that is light in which emits in one direction. Monochromatic in a given direction means only one direction. A solid angle, this is the unit of solid angle, unit of measuring solid angle, measurement of solid angle. Earlier this steradian is also called fundamental unit, but now this is said as derived unit, solid angle. This solid angle, this steradian means steradian is measured as this is a solid angle right. So this is a solid angle. Suppose if this is a cone, then this angle is called solid angle. If this is a cone, then this angle is called solid angle. So if light emits from here in this particular unit steradian means this is a cross sectional, this is a total
area steradian is measured at, this is the area which is occupy, say whatever the area may be, area upon r square, that is called the solid angle. So solid angle is equal to, solid angle, that is steradian, is the measurement of solid angle, that is area upon r square. Unlike radian, radian is what, arc upon radius, that is called radian. एंड उसका ये जुड़ा हुआ भाई स्टेरेडियन, ये सॉलिड एंगल को मेजर करता है, रेडियन जो है प्लेन एंगल को मेजर करता है. तो ये चीज़ है. और ये वाट पर सेकेंड, वाट क्या होता है, वाट होता है पावर. सो ये यहाँ से लाइट अगर इतना इमिट करे एक डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर यूनिट एंगल के डायरेक्शन में, जो कि इतना वाट पर स्टेरेडियन के हिसाब से हो, तो उसको, और इतनी फ्रीक्वेंसी हो, तो उसको हम कहेंगे 1 कैंडेला. आई होप यू गॉट इट. इससे ज़्यादा अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी ज़्यादा दिमाग न लगाओ, इतना याद रखो बहुत है. और आगे की क्लास में इसके बारे में और ज़्यादा हम बात करेंगे जब लाइट आएगी, तो उसमें कैंडेला के बारे में, ठीक है ना. सो ये है कैंडेला, ये डेफिनेशन है. अब उसके बाद बच गया एटॉमिक मास. ये तो आपको पता ही है एटॉमिक मास क्या होता है, फिर भी हम बताना चाहेंगे कि एटॉमिक मास के कैसे मेजर करते हैं और इसकी क्या यूनिट होती है. तो नेक्स्ट है एटॉमिक मास. एटॉमिक मास और मास ऑफ एटॉमिक सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड मोल. सो इसको मोल में हम मेजर करते हैं. तो मोल कैसे होता है, एटॉमिक सब्सटेंस मास ऑफ दिस, और कॉल्ड AMU. अर्लियर यूनिट वाज AMU, नाउ इट इज मेजर्ड इन मोल. तो मोल क्या है और इसको कैसे मेजर. सो मोल इज डिफाइंड एज, the amount of substance which contains as many as elementary quantities which contains as it contains in 0.012 kg of C12, means carbon isotopes of atomic mass 12, that is carbon isotopes whose atomic mass is 12, right now. So that is carbon isotopes. So this is the called mole. Mole is the amount of substance which contains as many as substance. Let me write this. Substance which contains as many as elementary quantities. What is this elementary quantities? Do you know? That is atoms, molecules or ions, etc. So as it contains 0.012 kg of C12 carbon isotopes whose atomic mass is 12. So that is called 1 mole, right now. And this is the amount of substance that is called 1 mole. The next one is Kelvin. Kelvin is the thermodynamic temperature. Thermodynamic temperature, right? This is the unit of thermodynamic temperature, which is equivalent to 1 upon 273.16 of the thermodynamic temperature, which is of the triple point, temperature of triple point, that is called 1 Kelvin, right now. This is the unit of thermodynamic, this is the unit of thermodynamic temperature, and this is the amount of temperature which is equivalent to,
the amount of temperature which is equivalent to let me write it, sorry. The amount of temperature which is equivalent to 1 by 273.16 of the thermodynamic temperature for triple point. What is triple point? Let me explain this. What is triple point? Triple point is the temperature at which water exists, water exists in all three states of matter, in solid, liquid and gas. That is called triple point. So the thermodynamic temperature where this triple point exists, the amount of temperature where triple point exists, that amount of temperature is something thermodynamic temperature, and 1 by 273.16 of that temperature is called Kelvin and it is denoted by K. तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सबका यूनिट्स क्या है, मेजरमेंट्स क्या है और किस तरीके से इसको हमें यूज करना है. ये सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए है, ये एग्ज़ाम में नहीं आते, बट फिर भी जानना चाहिए. सिलेबस में लिखा हुआ है, किताब में लिखी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए और ये जो है आपको याद होना चाहिए. So that's all for today. I hope you got this and you enjoyed this all informations, and this is a unique informations basically. So you got this and definitely you will be able to understand all these things one day and practice it. That's all. God bless. Keep watching and subscribe our channel on YouTube. God bless. Thank you.